Okay, Champions League is back, and Champions League is back with a lot of very good contests. One, a lot of thrilling contests, and a lot of controversy already. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। हम लोग आज बात कर रहे हैं अभी तक जो चैंपियंस लीग में हुआ है मैच डे 1 में। वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन द थर्सडे नाइट, तो अभी तक सिटी और नापोली वाला गेम एंड न्यू कासल बार्सिलोना गेम नहीं हुआ है। डोंट कम एट अस कि उसके बारे में बात नहीं करी। We had to stick to this schedule because हमारे कुछ कमिटमेंट्स थे otherwise, but this is where we are। उन दोनों में क्या ही निकल आएगा है? सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो पहले मैच में ही निकल आया था, मतलब पहले दिन पे ही, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्सेल। एंड क्या मतलब ऐसा क्या बोल दे हम लोग जो पिछले 10-12 साल में नहीं बोला गया है कि मैड्रिड को हमेशा लकी लकी पेनल्टीज मिलती हैं, मैड्रिड को हमेशा लकी डिसीजंस मिलते हैं somehow, especially Champions League में। And somehow whenever a team is playing well against Real Madrid, something goes wrong। हमने इस मैच में देखा that was never a handball, by the way, never a handball, not in a million years। And I don't know VAR वाले क्या कर रहे थे बैठ के, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे ऑल टुगेदर। हम सबको याद होगा रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न, जो बायर्न के अगेंस्ट रोनाल्डो को 2 पेनल्टीज मिली थी, बढ़िया बढ़िया सी हैट्रिक मार दी बायर्न। हम लोगों को यूवेंटस के अगेंस्ट याद है, कहाँ उनको लास्ट एकदम एंड स्टेजेस में आके 3-0 यूवेंटस जीत रहे थे, एक पेनल्टी मिलती है फालतू की, वो भी माइकल ओलिवर ने दी थी, वो भी बहुत फालतू की पेनल्टी। उसमें तो बुफॉन चढ़ गया था माइकल ओलिवर पे। अगर वो याद नहीं है तो प्लीज जाके एक बार वो सर्च करो वीडियो। माइकल ओलिवर की शक्ल ऐसी लग रही थी, भाई अब तू और मेरे पास आया तो मेरा कुछ निकल जाएगा नीचे निक्कर में अपनी। And apart from penalties, we remember decisions. Yeah, we remember the Cuadrado decision. We remember Ramos literally wrestling with Salah and costing Liverpool that game. We remember everything. And this is possibly just another decision in a long list of decisions that Madrid have got lucky with. That is all. Just adding to this, the most funny makes this thing more funny is that Madrid और पेरेस भाई साहब ने अभी रिसेंटली ही फीफा को लिखा है कि लालीगा में रेफरिंग स्टैंडर्ड्स आर वर्स। ये जो डीन हॉटसन का जो रेड कार्ड था लालीगा के लास्ट मैच में, दैट वाज आल्सो अ वेरी चैलेंजेबल रेड कार्ड। तो उसके बाद लिटरली वो रेफरी यूनियन ने बोला था कि वी आर सॉरी, वो नहीं है। देन कम्स दिस मैच उसी दिन ही। So, and this is what Marcel ka manager De Zerbi, Roberto De Zerbi, he said this. He said this after the game कि Madrid use this tactic again. His words, not mine. Madrid do this very effectively. They'll question referees before a big game, and then there is obvious pressure. And if something goes wrong, if something doesn't go their way, the way they want it to go, then they actually have the media apparatus to make it a big deal। भाई क्या बोलता है आप शिवम? देखो भाई, जस्ट एडिंग वन पे, हम लिटरली एथलेटिको के मैनेजर लिटरली यही सिम्योनी को बोलता है ही इज द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स वगैरह वगैरह, वी टॉक अबाउट हिम। बट लिटरली कोई नहीं बोलता पेरेस भाई साहब को। लिटरली पेरेस भाई साहब ने लिटरली वो तो कुछ अलग ही करते हैं, टू बी फेयर। कुछ लिटरली तो करता है। वो कुछ तो करता है बंदा। He's a master of many arts, actually. मास्टर ऑफ I know डार्क, what the art is. व्हाइट, ग्रीन और All येलो art. आर्ट्स। एक आई डोंट थिंक वैभव ने देखा होगा वो शो, शिवम ने देखा होगा 2.5 Men। उसमें ना चार्ली शीन एक एपिसोड में ही सेज समथिंग कि इट्स टाइम फॉर मी टू डू द वुडू दैट आई डू That वेरी I वेल। do so well. Yeah, Yes. I think somehow Papa Perez has that Champions League के टाइम खासकर, it's time for me to do the voodoo that I do very well। Yes. I love that dialogue, by the way. Thanks for reminding me. है ना? Classy dialogue, classy Charlie Sheen. A good Netflix something coming up, so we'll watch that. And classy Papa But Perez। classy Papa Perez has been doing this for 20 years almost. मतलब he knows how to deal with things. हमने इतने एग्जांपल्स की बात की पिछले साल ही एथलेटिको मैड्रिड का अल्वारेज डबल घटिया तरीके की डबल टच डिबेटेबल थी नहीं थी, लाइक आई नो इट वाजंट इवन क्लियर, but such things and that was so weird, like you haven't seen that thing, but yeah, such things happen with Real Madrid, especially in Champions League। La Liga में उतना होता भी है नहीं भी होता, but Champions League में तो well they do get edges, if you would। It happens they a little do too often। I'll leave it there। It happens a little too often। I don't know, I don't think anybody is going to be looking into it, but it happens a little too often for my liking।
Speaking of the game, it wasn't a good performance from Madrid also. Actually, Marcel ने dominate किया हुआ था. Genuine I do domination. not. I honestly do not remember the predictions that we had. I do not remember. That's how much we talk about football. But I knew, and I think I said that कि Marcel will play well and they will trouble Real Madrid, and it happened. And I'm very happy that it did. But at the same time, मेरे को पता था तब भी जीतेगी Madrid. तो आई एम श्योर हमारी प्रिडिक्शन में ये चीज होगी. पिछले हाँ. वीडियो में लोग जाके देख सकते हैं. ये चीज होगी कि सबने बोला होगा हाँ, they'll play कि well. जीतेगी मैड्रिड, खेलेगी Exactly. मार्सेल. Not surprised. So yeah, and I for some reason I knew this would be the case. It's a strong team, Marcel, but Madrid have their advantages. They have the players. Red card, injury, तब भी वो निकाल रही हैं. They do look strong. वैसे Real Madrid, from what It we've is a seen in good team. It is a very La- good team. So for them. देखते हैं. देखते हैं क्या होता है. But yeah, once again, Madrid being lucky in the Champions League. Where have we heard this before? Moving on. Every day. Moving on. Chelsea were given a reality check by Luke. Possibly. थोड़ा बहुत. Yeah, they were. 3-1 Bayern Munich जीते. Honestly, Bayern का attack genuinely very good. बाकी हाँ. सब still remains questionable. Defense खासकर and to some extent midfield as well. It does remain थोड़ा सा questionable, but attack में उनकी कमी नहीं है कोई भाई साहब. I feel जिसने चेल्सी का फर्स्ट गोल देखा है ना, I feel जो उन्होंने किया था विद एस्टेबाओ, पार्मर एंड ऑल, एंजो, लिटरली वो जो काउंटर बना था एंड पार्मर का जो फिनिश था, I feel ना इन लोगों का लिटरली उस दिन ऑफ डे था, बिकॉज दिस टीम को क्या बोलते चेक मिली है, बट दैट वाज एन ऑफ डे फॉर चेल्सी. लिटरली जो फर्स्ट गोल, जो ओनली गोल था चेल्सी के लिए, दैट गोल शोड द क्वालिटी एंड द प्राउस दैट दिस चेल्सी स्क्वाड. ये होता है जैसे आप पीएसजी का लास्ट सीजन नहीं देख लो ना, पीएसजी का फर्स्ट कुछ मैचेस में पीएसजी वर एब्सोल्युटली हॉरेंडस. आप न्यूकासल से आ रहे हो, दे वर लूजिंग टू रैंडम्स, but coming to literally second half of the tournament and you saw a new PSG. Right now Chelsea has that same. उनका बड़ा सीजन खत्म हुआ है, वे लिटरली उनको बंदों को लिटरली हॉलीडेज भी नहीं मिली है, तो कमिंग फ्रॉम दैट फैटिग भी है. They are And not so the many new players. So many Exactly. new players. But to be fair ना, कंपनी को हम लोग इतना रेट नहीं करते, बट वी शुड स्टार्ट रेटिंग कंपनी मोर. बंदे को हम लिटरली मजे में ले लेते हैं, कंपनी को हम लोग. अभी I will reserve that judgment. एक बार PSG वाला गेम होने दो. We'll see like how Bayern progress. They have see the forwards they have like obvious quality. ठीक है, even Gnabry has quality. Musiala नहीं खेल रहा. Olis, Luis Diaz. everyone has quality. कई जगह जो उनको है, और बायर्न का रियल टेस्ट चैंपियंस लीग में होगा, उनकी लीग में तो होगा नहीं. सो we'll see how well company does with this team. They can progress well. I still don't see them as winners at the moment. Still too early in the season to be making such judgment. Chelsea का point, Weber, you're correct there. But Chelsea का भी same problem है. उनके attacking talent बहुत अच्छा है, goals भी वो लाएंगे almost हर मैच में, but defense नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग. एंड कोच काफी अच्छा है, बट कई जगह वही चीजें दिख रही है जो पिछले साल थी, तो वो चीज चेल्सी को थोड़ा सफर करवा सकती है. रेस्ट इट वाज like it was kind of like it was easy for Bayern. Like Chelsea weren't at their best, and Bayern were. And you spoke about the goal that Palmer scored another almost जो ऑफसाइड हो गई थी. Fantastic finish, man. What a player. क्या skill है उसका. I swear, I love it. गलती से वो मिडफील्ड में है, वो उसको अगर काम करना है, he can be a goddamn literally very good striker. हाँ, he can play anywhere in the front line. Anywhere right now. वो कैम खेल सकता है, वो आपका मींस क्रिएटिव मिडफील्ड खेल सकता है, वो आपका चाहे तो विंगर खेल सकता है, वो बंदा लिटल जाएंगे आप तो स्ट्राइकर खेल सकता है. दे आर मैं अभी भी लिटरली बोलता हूँ सिटी ने इसको 50 मिलियन में कैसे बेचा. Fair. फिर उसके बाद चलते हैं सबसे एक्साइटिंग गेम जो था. We're not talking about every game obviously, but we have to talk about this game. Juventus versus Borussia Dortmund. Juventus इससे पहले जो उन्होंने सीरिया में मैच खेला था इंटर के अगेंस्ट, उसमें भी 4 गोल मार के आए थे, 4-3 जीत के आए थे. वो थ्रिलर था, वो भी एक गोल लास्ट स्टेजेस में उन्होंने गोल मारा था, जीत गए थे. ग्रेट. यहाँ पे जब आप सोचते हो कि हाँ 4-4 ड्रॉ हुआ है, तो आप ये नहीं सोचते हो कि पहला हाफ कुछ नहीं होगा. एक हाफ में 8 गोल मारे इन लोगों ने मिलके. यूवेंटस ने 90 मिनट्स के बाद 2 गोल मारे हैं ड्रॉ करने के लिए गेम.
मतलब मैं आपको टाइम स्टैम्प्स बताता हूँ। डॉर्टमुंड ने अडायमी ने मारा है 52 मिनट्स पे गोल, फिर उसके बाद 63 पे यिल्डिज ने मारा यूवेंटस के लिए, फिर उसके बाद नमेचा ने मारा 65 पे डॉर्टमुंड के लिए, व्लाहोविच ने मारा 67 पे, कोटो ने मारा डॉर्टमुंड के लिए 74 पे, उसके बाद ही उन्होंने एक और मारा, बेंसबाइनी ने 86 पे पेनल्टी मारी, दैट put them at 4-2 Dortmund. फिर 90 plus 4 पे Vlahovic and 90 plus 6 पे Kelly. That is how the game ended, and that literally is a mad finish. Genuinely a mad finish. मजा आया? भाई ओ हाँ एडिंग टू वन पॉइंट, इनके लास्ट मैच में भी इंटर ने 3 गोल मारे थे, 4-3 जीते हाँ, थे लास्ट हम्म, मैच इंटर के वही सामने। मैं कह रहा हूँ, लास्ट वही तो मैचेस में वही मैंने बोला अभी। for हाँ, a Syria side to concede 7 is abnormal. I don't know when I have seen for a them to Syria score 8 is also no. हाँ, for them to exactly score. score भाई so ये especially मजे में चल Juventus, रहे हैं। especially this Juventus squad and Allegri. मतलब that's not really. मतलब recent time at least that has not been a style. Early when he was with Juventus, I think he was a little more. Team was a little more exciting. अभी भी exciting है but different तरीकों से. What अच्छा अगेन इस पे भी हमने प्रेडिक्शन करी थी। मैंने कहा था गिरेसी विल स्कोर ऑब्वियसली एंड दैट डिडंट हैपन। लाइक 8 गोल पड़े, उस आदमी ने नहीं मारा जो वैसे हर वीकेंड मार रहा है। तो बट I think Del Piero said it after the match that it's a good sign that Juventus have been able to, because it's not at the moment they're not at their strongest, ना पिछले साल ना इस साल, and further that you know माना 90th minute मार रहे but they are making things happen चाहे last minute हो। So it's a good sign for Juventus. Maybe this will culminate in a better run in the league as well, and Napoli will not go as unchallenged as we think that they can, है ना? exactly पॉसिबली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई दिस जुवे स्क्वाड हैज बीन टूडोर के अंदर इन लोगों ने काम किया है। दे हैव साइन गुड प्लेयर्स, दे हैव नॉट स्पेंड दैट मच, बट जिन जिन प्लेयर्स को इन लोगों पर खर्च किया है दे आर डूइंग गुड एंड लिटरली बंदों ने लिटरली काम किया है अपने स्क्वाड के ऊपर। एंड अलेग्री के बाद टूडोर ने जब से ये संभाला है इंटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हराना सैन सीरो में, ऊपर से इनको लिटरली जो चल रहा है, आई थिंक दे आर टॉप 2 में है ये लोग सीरिया में भी, जो कि लास्ट सीजन भी इतने ऊपर नहीं थे एट दिस पॉइंट। So considering that Juve is on a good track, they are not at the best which they were, but they're improving. हो जाएगा। फिर एक और मैच जिसके बारे में बात करनी बनती है थोड़ी सी, लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको। लिवरपूल लेफ्ट इट लेट अगेन, बट देयर वाज अ डिफरेंस दिस टाइम एज कंपेयर्ड टू जो अभी तक उन्होंने किया है लीग में। Exactly. इस मैच में जेन्युइनली चांसेस बने थे, उनसे फिनिश नहीं हुए। साला का एक तो इनसाइड ऑफ द पोस्ट लग के बाहर चला गया। I saw that. एकिटी के ने खाली गोल, वो लास्ट सेकंड पे बॉल बाउंस हो गई, वो उससे कंट्रोल नहीं कर पाया उसको। वर्ड्स का एक खाली गोल मिस हुआ है बिकॉज फ्रिम्पोंग आ गया था बीच में। ऑनेस्टली दिस वाज अ मच बेटर परफॉर्मेंस लिवरपूल से, बट दे स्टिल हैड टू रिलाई ऑन अ लेट गोल। वैन डाइक ने गोल मारा एंड Jimmy Carragher said something I really agree with that कि Van Dijk looks like he will score when he wants to somehow. भाई मोस्ट जो जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे थे इन द ग्रुप, मोस्ट फनी पार्ट वाज मार्कस लोरेंटे स्कोरिंग 2 गोल्स फॉर एथलेटिक Again, आउट ऑफ 51। again. उसने 2020 में भी जब आए थे ये लोग यहाँ पे जीत के गए थे एनफील्ड में, तब भी उसने 2 गोल मारे थे भूत के बच्चे ने। Exactly. And that guy doesn't score much. And I want to, and he doesn't. Otherwise he doesn't. I want to ask one thing. वो जो पहला गोल था, should it have stood? ग्रीजमैन was standing ऐसे सामने कीपर के, ऑफसाइड में इतनी लंबी। And I was like, तुम लोग क्या रहे हो, क्या फूक के? भाई मैं बोल रहा हूँ ये रेफरी का सिचुएशन ना, इट विल डिटोरिएट एंड वी विल मेक, हम इसके ऊपर हर साल बनाएंगे। ये प्रेम हो, ये लालिगा हो, ये सीरिया हो, द रेफरिंग हैज गॉन डाउन माइल्स डाउन। ओके, लिटरली जब से इन लोगों ने वीआर दिया, जब से इन लोगों इन्होंने को अपना VR दिमाग दिया यूज करना ही बंद कर दिया है सबने मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली जब से ये जो वीआर का आया है ना, लिटरली इन लोगों ने, और वीआर वाले रेफरी तो और भी महान है इधर। मींस तुम्हारे पास 6-6 7-7 स्क्रीन होने के बाद भी 4-4 बंदे तुम बैठते हो, उधर भी तुमको दिखता नहीं है। हम इधर तीनों बंदे लिटर घर में लिटरली खाने के टाइम दिख जाते हैं भाई, ये तो मिस लिटिल फास्ट रिव्यू में दिख जाता है कि ये फाउल है। इन लोगों को लिटरली 4 रिव्यू दे दो, इनको कुछ नहीं दिखता, व्हिच इज अ वेरी फनी फैक्ट। But that is a point. मतलब everyone is able to see these things, but not the referee. वही जिसको देखना उन्हीं। But speaking of the game, it was a good game overall. I didn't expect Atletico to attack as much as they did eventually, honestly. मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स को आप लिटरली बोल रहे हो, अंडर एस्टिमेट भाई उन्होंने जेन्युइनली डार्क आर्ट्स अपने डिप्लॉय तो कर दिए थे। जब 2 गोल खा लिए थे 6 मिनट में, उसके बाद उन्होंने डिप्लॉय अच्छे से किया था कि भाई हाथ लगाया, गिर गए,
फूक मारी, गिर गए, फाउल पे फाउल दे, फाउल दे, फाउल दे, फाउल दे, लगे हुए थे। एंड but in all of this, Diego Simeone, the way he behaves, we all know how he does, how his coaching staff does. मतलब उसका कोचिंग स्टाफ का मेंबर जाके लिवरपूल फैंस जिनसे लड़ रहा था डिएगो सिमियोने, उन पे जाके थूक रहा है। मतलब भाई तू जाहिल हो क्या सारे? कुछ बोलना देता बट कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट जाहिलियत की हद होती है यार भाई, कुछ तो मतलब थोड़ा सा डेकोरम, और कुछ नहीं तो थूक रहा है। पहले बोतल फेंक के गया, फिर थूक रहा है, फिर आया वापस। एंड आई वाज लाइक क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मुझे And this मुझे is what, before we started recording this is what Shivam and I were talking about. For all his master of dark arts and all of that, वो पिछले 10 साल में 2 बार लीग जीता है, 15 साल में, 10 12 हाईएस्ट 13 साल में। 12-13 हाँ 12-13 साल में I don't हाईएस्ट think पेड this should मैनेजर। count as, and he's won nothing else. Does that count as mastery? भाई आप अपने अगर बोर्ड को लिटरली हाईएस्ट पेड मैनेजर हो वर्ल्ड के, लिटरली सऊदी वाले भी इतना नहीं देते, आपकी बोर्ड उतना देती है। इसको अगर डार्क आर्ट्स नहीं बोलोगे एंड आफ्टर विनिंग 2 ट्रॉफीज ओनली बोलोगे, नहीं आप खुद सोच, इधर जिदान, एंचेलोटी, अभी जावी अलोंसो, ये लोग इतना पैसा नहीं पाते आफ्टर विनिंग सो मच। ये कुछ क्या लालिगा पैसा नहीं है, उस वाली लीग में जाके 33 मिलियन पाउंड्स पा रहा है एज अ कोच। बंदे ने लिटरली आइदर इसके पास किसी का वीडियो है, नहीं तो ये लिटरली कोई डार्क आर्ट की कोई तंत्र विद्या करके गया है। फिर क्या बोलता है शो? Yeah, like I'm a Simeone fan. Like I appreciate his style of play and everything. So करता है हरकतें, of course, और वो दिखा थोड़ा सा. And not just as a manager, he was like he was like this as a player. हाँ, I know. He was like 98 World Cup Beckham scenario. It's infamous for it. इस वाले केस में खैर, I think it requires a bigger discussion, like how do we solve this problem between fans and anyone, चाहे opposition player हो, opposition manager हो वगैरह. हाँ, But that's a different debate altogether. I just say it was funny watching that, and I did not watch the assistant coach spit. But if he did, that is too much. ये हरकतें नहीं करते, थूकना वूकना अच्छा नहीं लगता यार ये, और ये वही मैं अजीब कह रहा हूँ, हरकत है। जाहिलियत मैं है ये, देख रहा हूँ ये, हाँ, ये जाहिलियत है ये। मतलब ये ऐसी जगह पे पता नहीं कैसे दिख जाती है, such a civilized place Exactly. overall, Assistant, Europe and and everything. more I don't know often than how not, and why they assistant are coaches able ही to करते do हैं ऐसी हरकतें। न्यूकासल वाले को देख, आर्सेनल वाले को थोड़ी देख, चल रहा है। सेट पीस कोच को, इसको it. देख, हाँ. सिमियोने के असिस्टेंट कोच को। I think today it is like because the main coach can't do certain things even if they want to. I think they hire their assistant coach. रेड कार्ड तो मेरी तरफ से मुक्का मार सिमियोने के को ही आइए मिला। उसको, वही मैं कह रहा हूँ, तू रेड जा कार्ड तो मेरी सिमियोने तरफ को से मिला। मार के उसको. But But overall good game for the neutrals, good honestly game speaking. it was, and It should have been at least 5 or 6-2, honestly. it could have been. Like I saw that miss that you just spoke about by Salah, and for the guys watching, we of course we have a WhatsApp group. हम लोगों का रेक्स भाई भी है उसमें. रेक्स भाई रात में लिख रहे थे कुछ लिवरपूल पे लॉरेंटे गोल मारता रहता है and all, and I wanted to write but I didn't. I was a little busy. कि late goal incoming. I genuinely wanted to write this. I didn't. Thank you for not writing. मैं but I knew it Thank will you be for not writing. coming in. तहे And तहे Nice दिल left. से, तहे ऐसा दिल कुछ से, नहीं है. तहे दिल से मैं बोल रहा हूँ। Thank you मेरे for लिखने से वो हट नहीं जाता, वो गोल तो आ ही जाता. But नहीं, I but knew, फिर भी like I could see it, you could feel it, they how were Liverpool pushing. has See, been to be playing. fair, in terms of आ जाता. quality and all, they were pushing. In terms of quality and all, हाँ. they were pushing. So And yeah, the way Liverpool has been playing recently, you can see कि they वो चढ़ेंगे end में, and they have that in them that someone or the other can get a goal. If Chiesa can get a goal, like of course Van Dijk can also get a goal. So good but game. yeah, that was the Champions League this week. मजा आया अभी तक तो. Yeah. आगे भी आएगा मजा, आगे और better games आ रहे हैं. 2 We'll talk matches about left, and I think both of them. We'll talk about the City Napoli and Newcastle Barcelona in the live on Monday. Do tune in for that. अभी बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग वीकेंड की जो आने वाला है. 3 बड़े मैचेस हैं, एंड लॉजिस्टिकली सबसे बड़ा मैच ये नहीं होना है, पर सबसे बड़ा मैच ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी. Yes. 2 big clubs, both United 1 fans, small team. both United fans. वैभव इतने सदमे में बिचारा म्यूट पे बोलता जा रहा है. तो वैभव गालियां दे रहा था. वैभव गालियां दे रहा था, वो नहीं चाहता था सब सुने, उसने कहा म्यूट पे दे देते. last chance for Ruben Amorim, is that the question? At this point ना मेरे क्लब में क्या हो रहा है, I also don't know. Okay.
Literally at this point both Shivam bhai and we will agree on this point कि भाई इस क्लब में कुछ भी हो सकता है at this point. इस क्लब में ब्रूनो भी कभी निकल सकता है जनवरी में. इस क्लब में Amorim sack हो सकता है. इस क्लब में literally कुछ भी हो सकता है at this point. Means even the management doesn't know what to do right now. Okay. क्योंकि at this point कोई कोच बड़ा कोच बचा भी नहीं है literally. अब literally अभी किसको यार लाओगे तुम लोग? मेरे को उस दिन हम लोग लाइव में बात कर रहे थे अबाउट दिस एंड वी हैड फ्लोटेड अ लॉट ऑफ नेम्स. पोचेटिनो भी तो खाली बैठा है अपेरेंटली. एक सेकंड, वो खाली नहीं है, वो तो यूएस की टीम को नहीं कर रहा था, हट गया क्या? पता नहीं, फिर नहीं खाली नहीं, वो आई US थिंक वो किसी ने भी डाला है हुआ था. मैनेजर, but वो probably US contract and all. There are a few names floated, but we'll talk about that. Main thing is this match is between two teams जो काफी, of course चेल्सी का उतना बुरा हाल नहीं है, but like you cannot exactly say what level of performances you'll get from both the teams. Even from Chelsea it's tough कि exact क्या आएगा. They are of course much Chelsea more do come stable in than as us. favorites. इस करूंगा Chelsea do हाँ literally. come in as favorites. much मैं more prediction ही नहीं like, करूंगा इस मैच में. Literally last time हमारे से तो बहुत ज्यादा, but and Chelsea having lost would of course be looking for some sort of revenge. Will it? Of course, it's the narrative around the game. Amorim पे pressure है. How he Right, handles right. that? Does he change? I think the world wants to see, will he change something or will it be the exact same thing? We will Yeah, get to know when we get just to to know. add one thing here, there are very strong rumors coming in कि अगला international break में they will press the reset button. You're right. They बहुत could. strong reports आ रहे हैं. भाई at this point बहुत मैं सोचा सारे कॉमेडी थिंग क्या पता है वो इतनी बार रीसेट बटन को प्रेस कर चुके हैं एट दिस पॉइंट रीसेट अलग बटन चीज को है. भी रीसेट बटन चाहिए हम्म. टूट चुका है रीसेट बटन वो अलग चीज है. बट स्पीकिंग ऑफ द गेम यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, आई थिंक आई रेड समथिंग समवेयर कि 12 साल में ओल्ड ट्रैफोर्ड पे चेल्सी नहीं जीते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Oh my 12-13 God, साल में. it's gonna break then. नहीं, maybe not, It could, maybe it somehow could. they managed to pick. चेल्सी ना हमारा लास्ट चार आई थिंक 4 आउटिंग्स में इट्स आइदर 1-1 ड्रॉ इट्स आइदर 0-0 ड्रॉ इट्स आइदर 1-1-0 और इवन 1-0 टू यूनाइटेड और चेल्सी वो ऐसे रहता है इट्स नॉट एवर अ हाई स्कोरिंग गेम बिटवीन अस यार this one might be. This one might be because United का defense porous है, हमने देखा. Chelsea have added a lot of exciting attackers to the side. Cole Palmer is back fit, so that should be interesting to watch. But एक चीज का अगर if we are to guess, do you think Amorim will change anything? नो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बंदे ने खुद बोला है भाई आई एम नॉट चेंजिंग माय फिलॉसफी नथिंग लाइक दैट वो बंदा I सैक हो think जाएगा इंटीग्रिटी नहीं चेंज करे I think नहीं, because अगर formation नहीं तो कुछ because और. of the way, I think because of the way he set up the team against City, formation तो will not change. Will the personnel थोड़ा ऊपर नीचे है ना, यही है ना. आई थिंक उगारते की जगह I कैसेमिरो think आ सकता है दैट चेंजेस कैन बी मेनू कैन स्टार्ट आल्सो क्योंकि मेनू को उस दिन 45 मिनट्स या 30 मिनट्स आई थिंक समथिंग मिला था एंड स्ट्राइकर वही रहेंगे नॉर्मली एंड मे बी मेसन माउंट आल्सो Do कैन you think he should ideally play Sesko because और कोई striker नहीं है. अमाद डियालो को अगर तो I don't think he's best served there, but whatever. Right wing back पे अगर डाल दिया वापस, कूनिया नहीं है तो you have Mount to absolutely side. no reason. नहीं, I'm just saying कूनिया नहीं है, you have absolutely no reason for Bruno Fernandes to be playing पीछे. मेनू और कासेमिरो को खिलाओ दैट्स पीछे. द प्रॉब्लम भाई दैट्स द प्रॉब्लम फर्नांडिस उसका और एम्बोमो को खिलाओ आगे आराम से सेस्को के पीछे. उसको आई थिंक ब्रूनो के साथ कुछ पड़ा है भाई ब्रूनो इज योर अटैकिंग मिडफील्ड इज योर क्रिएटिव इंजन लिटरली every Manchester United Bruno Fernandes creative engine literally that's on our tongue उसको तू कैसे सीडीएम खिला सकता है कासेमिरो तेरे पास पड़ा है भाई उगारते पड़ा है लिटरली एट द लास्ट मैच सिटी के अगेंस्ट उगारते क्रिएटिव इंजन बन गया था मींस कुछ भी एट दिस पॉइंट उगारते आगे खेल रहा था कुछ बंदा भी हो लिटरली रहा था. बट क्या बोलता है शिव, शुड इट आइडियली बी दैट ब्रूनो को आगे भेजो It वापस. should be. I think just एक personal feeling we might see that this time. City के साथ भी वही था. Cunha wasn't there, Mount wasn't there. We were waiting for Bruno to play a little forward, and that didn't happen. I think it हाँ. might happen this time. I think it might happen this time. If they are Again, to have any hope, they should. हाँ. And honestly, मैं just in my mind I was making a comparison. I'll try to be quick with this. Ten Hag didn't have much of a style of a play and everything, but थोड़े ज्यादा मैचेस जीत रहा था. क्यों जीत रहा था? बेसिकली ब्रूनो फर्नांड जब गोल के पास खेलता है और इसीलिए उसको 90 मिनट हर कोई पड़े रहने देता है कि भाई वो हो सकता है 90th मिनट कुछ निकाल दे. दैट इज हैज बीन प्रोबेबली द ओनली डिफरेंस. स्टाइल ऑफ प्लेस की बात नहीं करेंगे और रिजल्ट्स में शायद यही है कि ब्रूनो एटलीस्ट आगे खेल रहा क्लच मैन यार इज अ क्लच Fair. तो उसको अगर स्पेशली अब माउंट और कुन्या दोनों नहीं है उसको डाल दो आगे पीछे किसी को भी डाल दो मजराउई डाल दो
नहीं चलेगा, बट किसी और को डाल दो, लेट ब्रूनो आगे से पीछे आ जाएगा थोड़ा. इफ दैट एंड अ वेरी टाइट, like he'll have to be tactically flexible a little, and he'll have to be the team will have to be very well drilled to beat Chelsea कोई आसान टीम तो नहीं है. Maybe some positive result, then we can get hope. If not, if we lose another match and if he has not made any changes, he is then asking, like everyone's been saying it, then he's asking to get sacked. Like वो तो कह रहा है कि At this बस कर point, दो, पैसा दे दो, मैं जा रहा हूँ घर. Like हाँ वो सेवरेंस पे दे दो, मेरा जो होता है सैकिंग फी दे दो, मैं निकल रहा हूँ भाई. ऑलरेडी बुक Predictions? फिर वैसे ही Predictions? 1-0 I to Chelsea or a 1-1 draw, I feel. draw is my last time I was hopeful. This time my prediction is a draw, so I think it's a draw. 1 each, maybe 2 each at best. इससे ऊपर नहीं जाए. 2-1 United बोल दिया. लास्ट टाइम भी आपने बोला किसके अगेंस्ट? सिटी के अगेंस्ट? सिटी. हाँ यार वो तो आई थिंक तैश में बोल दिया था. आई डू थिंक यहाँ पे जीत जाएंगे ये लोग. प्रेशर में कुछ ना कुछ कर देंगे ये लोग शायद, बट देखते हैं. Let us see. बट लेट्स कम टू द बिगर ब्लॉकबस्टर टेक्निकली. Hmm. आर्सेनल वर्सेस Everton? मैनचेस्टर सिटी. Oh, अच्छा. अर्ली टाइटल डिसाइडर भाई लोग. अर्ली आर्सेनल. We have a lot of early title deciders this हाँ Premier League season, है ना? Great टाइटल matches. डिसाइडर एज इन अर्ली इन मतलब द रेस. early top 2, top 3 teams हैं ये. Exciting match. I'm waiting for that more than the United Chelsea match. Arsenal are very strong defensively. पिछले साल की हरकतें कोई भूला नहीं है. हाँ Stay humble and all that happened between Lewis Kelly and Haaland and Gabriel and whatnot and everyone. So that should be fun. City has regained their confidence. We'll see आज वो कैसा खेलते हैं. Again, it is, of course, I'll have to see the timings, but City का match काफी late है, so slight disadvantage which shouldn't be there for any team. संडे 9 PM क्या लेट है? हाँ, just adding to one point. आज का मैच भी तो है सिटी का. देखो, just अच्छा one for one. हाँ सिटी नेपोली यार आज भी तो है. तू ये देख, मैं कंपेयर करूं अगर अभी एक सेकंड. लिवरपूल का वेडनेसडे नाइट था मैच. लिवरपूल है वो सैटरडे को अर्ली किक ऑफ. हाँ, ये शेड्यूलिंग बेकार संडे को फिर भी हरकतें. संडे को लास्ट गेम है, कम से कम 2-4 घंटे फालतू मिल गए. लिवरपूल का सैटरडे को पहला मैच है 5 बजे. And why put such schedules like this? Like what sense does it make? Like bare minimum, if the rule says कि 2.5 दिन देना चाहिए या 3 दिन देना चाहिए, इससे ऊपर नहीं देते. It's hours. It's like 40 some hours, नहीं 60 some hours that you have to give us. less than 3 days होता है. Less than 3 days. तो वो बिल्कुल वो नाप तोल के उसको वैसे ही करते हैं. Still, back to the match. Arsenal City should be good. I am giving the edge to Arsenal, even though Haaland is in cracking form. Exactly. Mine also same, bhai. But slight advantage because to be very fair, City were not at their best. I know उन्होंने खोल दिया था United को, but United खुली थी. They didn't have खुली थी, not. But Arsenal, the kind of form they are in, the kind of settled squad they have, I think advantage Arsenal. I think all three of us are on the same page here. देखो टॉटनम और ब्राइटन के साथ वैसे ही था ना भाई. आप लोग देखो टॉटनम और ब्राइटन के साथ दे हैव अ प्रीटी सॉलिड डिफेंस. दोनों की टीम के पास. सिटी कुछ कर पाई. टू बी फेयर विद दिस स्क्वाड. आई एम नॉट सेइंग यूनाइटेड के सामने द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट. यूनाइटेड की डिफेंस वाज वेरी लीकी. हमारा जो नया फॉर्मेशन था वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट आर्सेनल ऑन द अदर हैंड आर कमिंग विद अ सॉलिड डिफेंस. आप देखो सलीबा, Gabriel, Magalhaes. Saliba, I don't know if he's fit, but whoever is playing, Mosquera played well, Hincapié has played, exactly. Gabriel, they have good players. And midfield भी इनके solid है. ऐसे predictions. I feel 2-1 to Arsenal or 2-0 to Arsenal. Okay. 2-0. I think City will score. If Arsenal are to win it, I think it's a 2-1 or a 3-2 that they will. I mean 3-1. 3-2 इतना कॉमन नहीं 3-1 भी हो सकता है. हाँ, मतलब एडवांटेज. I think 3-1 Arsenal. For me, it is going to be a draw. 1-1 or 2-1. 1-1 मेरे ख्याल से. Arsenal might end up playing a little more defensively than they should, giving City a little more respect. That can happen, very easily can happen, knowing Arteta, knowing how Arsenal play. बहुत easily हो सकता है. I understand. Then the other bigger game of this weekend is Liverpool-Everton, Merseyside derby. Everton have started well. They're defensively looking very solid. David Moyes के अंडर आ गए हैं वो लोग वापस, तो उनका spirits अपने आप में uplifted है. I don't know how many late winners Liverpool have left in the bank, honestly.
We'll get to know. They're already up with 4-5 at least. वही मैं कह रहा हूँ। But well, So- I think today you said something in between. डेविड मोइस ना उनका स्पिरिचुअल एनिमल है एवर्टन का। हाँ वही 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 वो वही। स्पिरिट एनिमल है उनका। वो उसकी फोटो लग जानी चाहिए गुडसन पार्क में, फोटो मुझे नहीं लगता भाई, है। स्टैचू स्टैचू But- स्टैचू बट गुडसन पार्क में नहीं है वो लोग। रिलीज भैया को हम बोल रहे हैं, Sorry. जैकी भाई हाँ। भी है हमारे इधर। That's what I'm saying. They have started well. उनके players भी अच्छे से settle हो रहे हैं धीरे धीरे। Liverpool are still working out their best combination, honestly speaking. They're But एक still चीज है ना, settling. एनफील्ड भाई इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं Your record against Everton has been एवर्टन ने मतलब- लास्ट ईयर भी लास्ट मिनट्स में गोल मारा था। वो out उनके of घर में nowhere. था, नहीं वो इधर था। वो इधर था। हाँ वो इधर था। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस विल अगेन बी अ वेरी बिग टफ चैलेंज फॉर लिवरपूल बिकॉज बर्नली, एटलेटिको, एवर्टन ये तीनों लोअर ब्लॉक टीम्स हैं। बर्नली को हमने देखा कितना स्ट्रगल किया इन लोगों ने। एटलेटिको शुरू में गोल्स आ गए, उसके बाद भी इन लोगों ने एक बीच में आके स्ट्रगल किया है। उसके बाद अब एवर्टन में भी दे विल शट शॉप शुरू में, दे विल नॉट लेट ऑफ Exactly. इजी chances. तो it will be a huge test for Liverpool and Everton will be looking at this team कि यार अभी इसको hit and run कर सकते हैं। but they'll have जैसा to Burnley- defend all 90 plus minutes. It is possible, but Not necessarily यार, usually क्योंकि अटैकिंग टैलेंट ऐसा नहीं है कि जीरो है। ग्रिलिश वगैरह Exactly. अच्छा अटैकिंग उनके पास। हाँ नहीं, but वही है, Burnley they के will have to do it till 90 plus because Liverpool हाँ, always have a goal in them. नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बर्नली के साथ वो प्रॉब्लम थी, उनके पास आउट बॉल इतना अच्छी क्वालिटी नहीं थी। इनके पास आउट बॉल की क्वालिटी में ग्रिलिश और बाकी रनर्स हैं, दे विल एक्चुअली बी मोर डेंजरस। Actually, I'm excited about Grealish versus. I'm not gonna say Frimpong. I'm not gonna say anything It is else. Frimpong. Grealish versus Szoboszlai. नहीं it is Frimpong, it will be It's Frimpong। मैं Frimpong. बता भाई, रहा हूँ Szoboszlai खिला देगा वो राइट बैक पे ग्रेलिश को डबल टीम करने के लिए। if Grealish can be kept quiet and we might be putting a little too much pressure on Grealish, but at the moment if he can be double teamed and Szoboszlai versus Grealish होता है, I will जैकी love भाई to को आप watch लिटरली this match. अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। जैकी किसको? भाई, जैकी भाई को आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो आप। Underestimate नहीं कर रहा, but it will be fun. Like Szoboszlai versus Yeah, it will be Grealish. a fun match If to that watch. happens, it will be fun. I love मर्सीसाइड to see डर्बी that. इज ऑलवेज अ फन। मर्सीसाइड भाई। डर्बीज में लिटरली मजा आता है भाई, जितनी भी आपकी टीम सॉलिड हो जाए, बट ये ऐसी एकलौती डर्बी बची हुई है जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस चार्ज रहते हैं अभी भी। एग्जैक्टली यूनाइटेड डर्बी में तो भाई पता है सबको लिटरली भाई Right, क्या right, है। right. नहीं नॉट जस्ट दैट, मैनचेस्टर डर्बी में ना इतना वो यार हिस्टोरिकली इतना नहीं है ना, ये लोग तो 100 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना। हाँ, ये अभी मैनचेस्टर डर्बी तो अभी लिटिल 20 साल में स्टार्ट हुई है, मींस 20 भी क्या, Technically. 10 साल में, 10-12 हाँ, साल में, 10 उससे पहले तो कंपटीशन ही नहीं था। हाँ, फिर अभी भी आई नहीं थिंक लिवरपूल अब 2-1 एग्जैक्टली वही बोलने लगा था, और अब ये तो उल्टे साइड में नहीं है। तो क्या है। बोलते हैं, प्रेडिक्शंस 2-1 करें फटाफट। लिवरपूल एडवांटेज बिकॉज आई थिंक लिवरपूल निकाल लेगी easily or not, we'll see, but I think this one is harder to like judge because it could end up being a drubbing by Liverpool. It could be नहीं tied. ड्रबिंग तो नहीं होगा, एवर्टन के साथ ड्रबिंग तो नहीं हो पाएगा। भाई एक Not चीज with मैं बोलूंगा मोइस का, जब तुमने ये मैच अच्छा खेला एटलेटिको वाला, फिर भी मोइस का एवर्टन नहीं होगा भाई। वैभव सिंह, वैभव क्या वैभव कह ने रहा तो बोल दिया 2-1, वैभव ने बोल दिया 2-1। अच्छा 2-1 लिवरपूल, शिवम तू बता। हाँ तू बता शिवम। 3-1 लिवरपूल। 3-1 ओके। आई थिंक इट इज अ 1-1। Oh, let us see. चलो आप लोग अपने प्रेडिक्शंस बताना यार, एंड आल्सो डू लेट अस नो, इज इट जस्ट लक or is it Papa Perez का voodoo that carries Real Madrid to 15 and possibly 16? Who knows? नया Easily. स्टेडियम बनाया है, they want to flaunt another trophy. Who knows? Do let us know in the comments. वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दबा देना यार प्लीज से। 2 सब्सक्राइबर रह गए 200 के लिए, 200 करवा दो प्लीज प्लीज। चलो ऑन दैट नोट, बाय बाय।